Hi, this is Pratap Manish, English language and personality development coach, and I welcome you to this class of synonyms and antonyms. Do you know, English is all about having a wonderful word power, vocabulary. यदि आपके पास शब्द ही शब्द हैं, तो आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं, बेहतर इंग्लिश लिख सकते हैं। शब्दों को कहाँ इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, वर्ब में, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में। यदि ये कला आपके पास आ चुका है तो आप इंग्लिश में लिखने और बोलने में बिल्कुल सक्षम और प्रबल होंगे। Now let me come to English because I am teaching English right now. So words power is the strength, is the brick, is the unit of speaking and writing English. So here we go with the synonyms and antonyms now. The first synonym, the first word that is here is despair. Despair is a word that shows sadness. Despair is the word that shows a negative feeling that comes in our mind. So despair means nirasha. Slightly the spelling is mistaken. It is nirasha. Nirasha. So disappointment, discouragement, depression, misery. So we can use this word. The misery in this story, it means the sadness in this story. It means इस कहानी में क्या निराशा है? The misery in this story, in the despair in this story will touch you, will make you cry, will make you weep. You will unable to stop your tears from rolling out. आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे इसकी निराशा इसके. So this is how you can word. You can use any kind of synonyms, and the synonyms will have similar effect on the sentence. Moving to the antonym. Antonym means opposite in meaning. Synonym means similar in meaning. तो similar in meaning है despair का discouragement, depression, misery, disappointment, और antonym है hope, optimism, courage and anticipation. I thank you in an anticipation. मतलब आप उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, ये मान करके मैं पहले से थैंक यू बोल रहा हूँ. Anticipation. So despair, the antonym is anticipation. Right. So moving to the next is dictator. Dictator means Tanashah in Hindi. So who was the dictator? The well-known dictator was Hitler, Adolf Hitler. The same way we'll talk about the tyrant. Tyranny and tyrant. एक ही word से कई word बनते हैं. Every word has a noun form, has a verb form, has an adjective and adverb form. तो आप जब भी एक शब्द सीखते हैं तो आपको कई शब्द सीखने का मौका मिलता है यदि आप वाइड ओपन अपने दिमाग को खोल करके और अपने कानों को खोल करके और सुनते और पढ़ते और लिखते हैं तो. So tyrant, autocrat, despot, oppressor who suppresses the people, and the other antonym is democrat, follower, who listens to every one of the people, and that is democrat, just opposite of dictatorship. So dictatorship noun है, dictator noun person है, dictatorship the process है, dictate is verb. तो हर एक वर्ड का आपको रूट देखना है. डिक्टेट से बना डिक्टेटर और उसी से बना डिक्टेटरशिप. सो अपोजिट ऑफ डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट. So the same way you can use different kind of part of speech, their functions, and you need to know how these words function. Well, next is doleful. Doleful, that is very sad, dismal, gloomy, miserable, cheerless, sad, melancholy, mournful, unhappy, depressed. These are the synonyms. The antonym is elated. I am elated to invite you.
I'm very happy, glad, joyful, cheerful, delighted. So these all are the synonyms of, these are the antonyms and of doleful. Doleful means sad. That is a doleful activity that you have did. Sad. Doleful accident. So you need to understand. The next is elegant. Elegant adjective है. Elegancy, elegance noun है. Elegance बोलेंगे तो noun हो जाएगा. I love your elegance. शिष्टता. क्या है इसका हिंदी? शिष्टता, शालीनता. So शिष्ट. This is the slightly the font has changed. That's why it is शिष्ट. सभ्य, luxurious, polished, dignified, fine, graceful, refined, exquisite and polite. And just opposite of these all is inexpensive, ugly, simple, awkward, usual, rough, vulgar, rude and cruel. The next word is eloquent. Eloquence noun, eloquent adjective. Eloquent speaker, suvakta. Eloquent and impressive, expressive, vivid, clear, meaningful, graceful, significant. जो eloquent होते हैं वो बड़े ही clear होते हैं. सुवक्ता जो होते हैं बड़े ही स्पष्ट बोलते हैं. So the opposite is hesitant, meaningless, clumsy, inexpensive or dull. Dull speaker, inexpensive speaker, unclear speaker. So the antonym is hesitant, meaningless, clumsy, inexpensive or dull. If you want to improve your word power, I must repeat how to improve your words. If you want to improve your word power, you need to make sentences. Sit alone and try to make number of sentences on all these words. The more sentences you speak, you become fluent in speaking. The more sentences you write, you become fluent in writing. जितने शब्द आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे उतना सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे उतना आप फ्लुएंट होंगे राइटिंग में और स्पीकिंग में. If you write more, you'll become a writer. If you speak more, you'll become a speaker. So don't worry, just start. जितने भी शब्द आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए. That will be definitely in your language. Moving ahead, the next is erudite. Erudite means a person who is elite, who is quite intelligent, वैज्ञानिक and learned, educated, learned. I have a learned friend, educated. My friends are educated, enlightened, academic, wise, intellectual. So illiterate and ignorant are just antonym of that. Illiterate and arrogant. Ignorant. जो अज्ञानी है, ज्ञानी और अज्ञानी. This is the difference, erudite and arrogant. The next is exotic. एक्सोटिक बाहरी भी होता है, एक्सोटिक नेचुरल भी होता है. यदि कोई अब घर से बाहर दूर का है तो उसको एक्सोटिक बोलते हैं. एक्सोटिक, फैसिनेटिंग, स्ट्रेंज, मार्वेलस, ये सिनोनिम्स हैं. एक्सोटिक, फैसिनेटिंग, स्ट्रेंज एंड मार्वेलस. द अपोजिट इज डोमेस्टिक, कॉमन, फैमिलियर एंड ऑर्डिनरी. सो ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन. He is a domestic person, घरेलू. और जो बाहरी है exotic, या तो नेचुरल कह लीजिए और या तो विदेशी कह लीजिए. So exotic, that was exotic trip. मतलब बाहरी ऐसे ऐसे चीज़ नज़ारे देखने को मिले जो घर में आसपास दिखते ही नहीं है. That is very with mountains and different kind of sceneries and all and snow. So exotic. Next is extraordinary. Extraordinary का मतलब होता है असाधारण. जैसे बोलेंगे यू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, आपके पास असाधारण टैलेंट है. सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज अनदर एडजेक्टिव. इट इज एडजेक्टिव, असाधारण. सो इसका सिनोनिम्स क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी का है अनयूजुअल, फैंटास्टिक, रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, एस्टोनिशिंग, अनकॉमन एंड अमेजिंग. और इसी का एंटोनिम हुआ ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल, कॉमनप्लेस, मीडियोकर, कस्टमरी, एवरेज एंड नॉर्मल. सो उल्टा एक्स्ट्राऑर्डिनरी का हुआ नॉर्मल.
he is a normal student, he is an extraordinary student. असाधारण, साधारण स्टूडेंट, he is a ordinary, ordinary और extraordinary. एक्स्ट्रा लगने से उसका जस्ट अपोजिट बन जाता है. This is how you need to improve your word path, by learning the synonyms, antonyms, and not only learning but using these synonyms and antonyms in sentences. Make sentences and send it to me. I'll check and revert back to you. This is the way that how you can learn word path, sentences, writing and speaking. Have a great day. Bye bye.